सभी जानते हैं कि गुलशन जी एक स्टॉलवर्ट रहे हैं अपने ज़माने में. ही एक्चुअली वाज सच अ ट्रेंड सेटर व्हेन इट केम टू म्यूज़िक और बहुत सारे न्यूकमर्स को चांसेस दिए उन्होंने. और वो जो म्यूज़िक का दौर था कुछ और ही था. इतना सारा न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स. तो उसी चीज़ को आई थिंक कायम रखना चाहते हैं भूषण जी. एंड आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट हिम. ये जो श्रद्धांजलि किया है उन्होंने भूषण जी के लिए, बहुत ही अच्छे थॉट के साथ उन्होंने शुरुआत की. हमारी जो भी मतलब इतने सालों की एक कंट्रीब्यूशन जो गुलशन जी की रही है, टी सीरीज़ की रही है म्यूज़िक के लिए, तो हम सबको एक इट्स टाइम फॉर अस टू शो आवर ग्रेटिट्यूड, शो आवर अप्रिसिएशन. तो ये जो शो है, हम सब यहाँ इतने सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट सब मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं. तो एक म्यूज़िक की एक जीत है, म्यूज़िक की सेलिब्रेशन है. और आज एक अपना ओम शांति ओम का जो टाइटल सॉन्ग है दीवानगी दीवानगी, वो गाना है और एक एंथम है टुवर्ड्स द एंड. तो उन दोनों गानों के कुछ गा रहा हूँ. Well, as you know, me and Bhushan sir have a very nice bond. He's believed in me, believed in my vision in Zindagi Aa Raha Hoon Main. He just blindly gave me that beautiful song, beautiful track, and ever since then it's just been flying. And obviously all of Heropandi's tracks were promoted so well by T Series, so I'm very gracious and thankful to Bhushan sir. And I'll always be there to support him. So yeah. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ. Very proud that I have been able to contribute to this journey, which is absolutely magnificent. T Series, 30 years, glorious, and very inspired by Bhushan. What he has done, how he has taken his father's legacy forward, built this empire. I mean, he doesn't, his passion doesn't roar, but he's like this silent, quiet voice that keeps trying harder, slowly and quietly. मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि वासु अपनी वासुगिरी चालू रखे. लेकिन हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं हर्षवर्धन कुलकर्णी, फिल्म के लेखक भी वही हैं, वो लिख रहे हैं. अभी तक लिख नहीं पाए. जब वो लिखेंगे तो हम डिसीजन लेंगे कि वाकई में कहानी पिक्चर बनाने लायक है या नहीं. ये अल्टीमेटली वो डिसीजन वो खुद लेंगे. मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ. मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. और जो कंपनी उन्होंने बनाई अभी तक, इट्स फैंटास्टिक. जो पिताजी का सपना है भूषण ने जो कंप्लीट किया, वो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया. Well, looking forward to a lot of performances, and of course it's a tribute to Gulshan Kumar sir, and he's someone who I truly respect a lot. So yeah, I think just reliving all the magic that he's always created. I think सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे कि T Series has been a big contribution to the film industry. सालों से they've been contributing to the music industry. I have known Bhushan ji as a personal friend for many years, and he's been a great support, not just to my films but also to the film industry, to the music industry. And we're here just to show solidarity and support and give big congratulations. Looking forward to the evening. I want to congratulate everyone, and I think they've played a very important part in Indian films and Indian music, and I want to congratulate everyone, and I want to thank them for inviting us here. Well, I have an amazing association with T Series. They've given me some of the most amazing songs for my movies, and the biggest song of my career so far, which is Baby Doll. So I'm really happy to be here, glad to be invited, and here to support. संगीत, म्यूज़िक, टी सीरीज़ सालों से सदियों से जाना गया है. बहुत उम्दे कलाकार हमको मिल चुके हैं हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को टी सीरीज़ के द्वारा. So I'm very excited to be able to see all of them come together to pay tribute to one of the arguably the foundation layers of Hindi cinema music and even regional music, Gulshan Kumar. I can give you a small anecdote about Bhushan. I've played cricket with him. We were neighbors, in fact, before Gulshan ji's demise, and I played cricket with him, and I didn't know he would turn out to be somebody who's a foundation layer. How are you? I'm good. Good to see you inside. Go on. He's been somebody who's laid the foundation for music's evolution in our country. So he's carried forward the legacy of Gulshan ji fantastically.
and I think wherever Gulshan ji is, he'll be really proud of what Bhushan has achieved, and he's only getting better. That's the best part. It's not that he's only continued what Gulshan ji has done. He's made the whole company grow, and that's the most amazing part.